This program have compile and store in the database. The block structure of the subprogram is similar to a structure of anonymous block. Subprogram can be declared not only at the schema level. Just a minute. Hello, sir. Sir, the procedure and function are named plsql block that are also known as subprogram. These subprogram are compiled and stored in the database. The block structure of the subprogram is similar to a anonymous block. Subprogram can be declared not only schema level but also plsql block. जैसे कि आप anonymous block define कर रहे थे, anonymous block मतलब जो begin end के अंदर जो भी कोडिंग पास कर रहे थे PLSQL में सब प्रोग्राम उस तरह से डिफाइन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक नेम दिया जाएगा लाइक क्रिएट प्रोसीजर और क्रिएट फंक्शन. मतलब ये जो एनोनिमस जो स्ट्रक्चर है एक फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर स्टोर होगा. It is having a 3 section. One is a declarative section, another is executable section, another is exception section. Declarative section subprogram have an optional declarative section. अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, कोई फंक्शन डिफाइन करना है, तो आपको डिक्लेयर कीवर्ड के मदद से यूज करना पड़ेगा. The optional declarative section as follow: the is and as keyword is used. Another is executable section. This is a mandatory section of a subprogram which contain the implementation of the business logic. एग्जीक्यूटिबल सेक्शन में क्या होता है ना, आपका जो कोडिंग आप लिखते हो PLSQL का, वो कोडिंग एग्जीक्यूटिबल सेक्शन में स्टोर होता है. देन ऑप्शनल जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शन सेक्शन. दिस इज एन ऑप्शनल सेक्शन, मींस यू कैन handle the exception or you cannot handle the exception. It is depend upon you. It is having a 3 part: declarative, where you are defining a variable and function, and executable section where you implement the business logic or coding part, and another is exception handling section. Suppose if you are expecting that in that lines of code there may be a chance of exception, you put that line into the exception section. The difference between anonymous block and subprogram. So what is the difference? In subprogram your procedure is belongs, your function is belongs. So what is the difference between them? Anonymous block is called as the unnamed PLSQL block, means it is not having any kind of name. Subprogram is a named PLSQL block. It is compiled every time. Okay, it is compiled every time. It is compiled only once. It not store in the database. It store in the database. Okay, means anonymous block is not stored in the database. Means once you write, then after you are getting a result, when you close the ID, if you want to get the same result, again you have to write that same code. आपको फिर से वो कोड लिखना पड़ेगा वो रिजल्ट जानने के लिए. लेकिन सब प्रोग्राम में क्या होता है, एक बार आप स्टोर कर देते हो तो आपको लिखना नहीं पड़ेगा. It do not return any value. Function is return a value. When you give or pass any kind of value at runtime to the subprogram, it return the result. It cannot take the parameter, means at runtime you are not passing any value. तो ये यूजर के लिए इंटरेक्शन नहीं करता है at runtime. जैसे कि आपको क्या बनता है, एंटर ए नंबर 1, एंटर ए नंबर 2, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप यूज करते थे. तो यहाँ पर इस तरह से वो डायनेमिक नेचर नहीं होता है एनोनिमस ब्लॉक, वो स्टैटिक नेचर होता है. मीन्स आप जो डिफाइन करोगे वही चीज आपको शो करेगा. इट कैन टेक पैरामीटर, मीन्स parameter means it is interacting with the user and which is a dynamic in nature.
Send this one. Then for creating a procedure, we have to write create or replace procedure name. The first you have to pass create or procedure name. Then you have to pass the argument is and as keyword. Then your procedure body. Procedure name is the name of the procedure to be created. Argument is the name to given procedure parameter. Every argument is associated made with the data type. Mode of the argument is in and in, out, in and out. Data type is the data type of the associated parameter. The data type of parameter cannot have explicit in size. Procedure body is the plsql block that make up to the code. Okay. Then I am showing you how to create a procedure. आपको स्क्रीन विजिबल हो रहा है? हाँ सर। Yes, sir. And it is a simple procedure and define here. Create or replace procedure, my procedure. Create or replace procedure, my procedure as
Then I am passing a only one statement. Okay, so I am passing here begin and end. Hello, I am a procedure. That is a declaration of procedure. Procedure is created now for executing the procedure or for getting a result. Either you have to write a execute then procedure name. Showing you hello all I am procedure, or here I define begin my procedure. In the two way you can call the procedure. Either you have to write execute then procedure name, or in the begin and end block you can pass the procedure. Okay, so it is a two method which is used for executing your procedure. It is a simple procedure. Here I am not using any kind of table where I retrieve the record. Just now similar way for creating a function, create or replace function. Function name is used. Then argument one, data type one, then data type two, return data type, then function body. The function name is the name of the function to be created. Argument is the name given to the function parameter, means which value you can pass as a runtime. Mode is the type of parameter. Data type is the data type that is associated with the parameter. Return data type is the data type that returns some value from a function. Or last is function body, is a plsql block that make up the function code. I am showing you other program of procedure which you can better understand it. The simple function that we define. Create or replace function total cost, return number, then total number 2 equals to 0. Select count star into total from customer where it is returning a value. Some total cost. Oh, it is not working here. This earlier we are creating a customer table. It is retrieve a record from the customer table.
create a replace function total cost return number is total number precision is 2. It will show the two length of number 10 15 up to 99 it will display. Select count star into total from customers table. It is retrieve all the data, means it is counting how many rows are present in a customer table. The function is created. Now it is retrieve the record. It is called declare. Then we are defining a variable c number 2. In begin and end, we are initializing the variable. We are calling a function. When you are calling a function, it is counting how many rows are present. How many rows are present in a customer table. So when I run this file, the total number of customer table is 6. Now check that in the customer table, 6 rows are present or not. Select star from okay. So there are 6 records present. So that it is when you execute this function, it shows सर ठीक है फंक्शन पार्ट टा उधर पूछेगा सर ये फंक्शन पार्ट तो यस सर ये फंक्शन बनेवा को हेले मते फास्ट बनेवा पड़िबो create or replace function. Create or replace function name. Okay. Function is returning a value. Procedure and function is return a value. So for returning the value, we are using return number. So it is return the number. Okay. Then each I am defining a variable. Variable name is total. Okay. total And total initial value is 0. Okay. Yeah. Now we are passing a statement. Begin and end statement. We are passing a statement. Select count star into total from customer. So it is retrieve the number of row that is present in a customer table. Okay. And after retrieve, then it is showing you return total. So it is return the total value. Okay. total value So in another block, we are passing begin and end. Declare, we are passing a variable c number 2. Then in begin and end statement, we are passing a variable equals to total cost. Means here we are calling a function. When you call a function, this function is execute. It is return you how many rows are present. It is return the total. When it is return the total, it is stored in a C variable. okay Then it is showing you total number of customer is C. Means total number of customer is 6. Okay. yes sir yeah So there is a 6 record is present.
passing parameter to a function means runtime you have to pass some value. So another example. Passing create or replace function name is get salary. Okay, so function name is get salary, p underscore id. So here I'm creating a table. Create now function is created. Create or replace function get salary. Then PID employee, so it is retrieve the employee ID means after runtime we are passing the employee ID, then it is return the salary. The return number is, then whatever the salary it will return it store in the v underscore salary variable. ओके तो यहाँ पर मैंने फंक्शन डिफाइन किया क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन नेम इज गेट सैलरी. इस फंक्शन में पैरामीटर क्या है ना, p underscore id is a parameter value which is retrieve a record from employee table. employee table से वो record retrieve करेगा. कौन सा record retrieve करेगा ना, employee id retrieve करेगा. एम्प्लॉय आईडी वो पैरामीटर लेगा, पैरामीटर लेकर हमको क्या रिटर्न करेगा, तो हमको सैलरी रिटर्न करेगा. जो भी आईडी हम पास करेंगे तो उसका सैलरी हमको रिटर्न करेगा. तो बिगिन सिलेक्ट सैलरी, तो इट इज सिलेक्ट सैलरी इनटू वी सैलरी. तो सैलरी रिट्राइव करके वी डॉट सैलरी वेरिएबल में स्टोर करेगा, जहां पर एम्प्लॉय आईडी जो रन टाइम में जो एम्प्लॉय आईडी हम पास करेंगे वही एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू वो रिटर्न करेगा. तो यहाँ पर मैंने फंक्शन को क्रिएट कर दिया. देन मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया. इट इज शोइंग यू 24,000. जो एम्प्लॉय आईडी 100 है उसका सैलरी 24,000 है. ये है एक वे फॉर एग्जीक्यूटिंग. नेक्स्ट वे में क्या है ना, डिक्लेयर एसएल एम्प्लॉय डॉट सैलरी, तो सैलरी गेट सैलरी. तो गेट सैलरी फंक्शन को कॉल किया, जो भी सैलरी वो रिटर्न करेगा एसएल वेरिएबल में स्टोर होगा. तो यहाँ पर आपको शो करेगा द सैलरी इज, जो सैलरी है वो यहाँ पर शो करेगा. The salary is 24,000. So it is a two method that you have to use for calling the function, parameterized function. तो जो आप 100 यहाँ पर पास कर रहे हो वो 100 जाकर ये जो PID है यहाँ पर स्टोर होगा, जो किसके साथ लिंक अप है ना, एम्प्लॉय आईडी के साथ लिंक अप है. तो जिसका एम्प्लॉय आईडी 100 है तो इट इज रिट्राइव द सैलरी and store in the v underscore salary variable.
सुशील यस सर. दिला दो. हाँ सर. हाँ, शुभम हाँ सर. मुस्कान बुझेला. Yes, sir. राहुल तुमको समझ में आया तो यस सर. it is an example of function with parameter. Okay, so ninth chapter is over. Some other programs are available. It is okay, so in the next chapter there is a another brief description about procedure and function is there. Okay, so in that chapter we'll discuss. So here we're defining a three variable in the declarative section A, B, C. Okay, it is optional part. Then function find maximum. It is find out the maximum value. So it will take the input of two value. दो value input लेगा और return करेगा क्या ना जो value return करेगा वो होगा z. कंडीशन यहाँ पर चेक होगा. If x greater than y तो z में x स्टोर होगा. अगर x greater than y नहीं है तो z में y स्टोर होगा. रिटर्न z करेगा. So here is return the maximum of 23 and 45. तो यहाँ पर क्या हुआ देखो. यहाँ पर दो वेरिएबल a और b डिफाइन किया गया. c में हम फाइंड मैक्सिमम फंक्शन को कॉल किए. जो a और b वैल्यू है यहाँ पर पास किया गया. तो a और b वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा. x एंड y में स्टोर होगा. तो स्टोर होने के बाद यहाँ पर कंडीशन चेक होगा. अगर x ग्रेटर देन y है तो z में x स्टोर होगा और z में y स्टोर होगा. तो ये रिटर्न z करेगा. जो रिटर्न z करेगा वो c में आकर स्टोर होगा. तो वही होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू. ये भी एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन है. Okay. These are all about your function with parameter. In next class, we go for the book 2. First book is over. Okay, then we move to the book 2. Okay, ठीक है. तो कल पढ़ेंगे. कल क्लास नहीं होगा. जन्माष्टमी है. पूजा है हमारा.
कल नहीं होगा, परसों क्लास होगा। ओके, ठीक है सर। ओके। नेक्स्ट क्लास में ये पहला बुक खत्म हो गया, अब दूसरा बुक हम शुरू करेंगे। ओवर अप टू 9 चैप्टर, 9 चैप्टर ओवर हो गए।